Hello and welcome students. Today we are going to study the first order reaction. Okay, so what are the first order reaction? In this class of reaction, the rate of reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactants. It means suppose we are taking example that the R convert into P and this reaction is of first order reaction. So the rate of the reaction is directly proportional to the this first power of the concentration of reactant, and this kind of reactions are called first order reaction. So when we write the differential equation of this order, so we can write the d minus dr upon dt, and you all know that the minus sign represent that the concentration of the reactant continuously decreasing with time, so we have to write the minus dr upon dt. As we wrote that minus dr upon dt, it is the rate, okay, and also the rate of the reaction is kr. So we can write both the things to equal to each other. So now I am transferring this dt to this side and this r to this side. So now the equation is the dr upon dt is equal to minus kt. Understood? So now we are going to do the integration. So by integrating this equation, we get the integration of dr upon r is equal to integration of minus k dt. We found the result ln r is equal to minus kt, and the c is the integration constant here. So for the value of the c, we have to do some things. So suppose at the t is equal to 0, when the reaction is not reaction has not started, that time the t is equal to 0, the concentration is the initial concentration, means r was r naught. So now we are writing this values in that reaction. So ln r की जगह क्या हो जाएगा, ln r naught minus kt. So it is minus k into 0 because t is equal to 0, so it will hold the 0. Okay, so minus kt plus c, so it is k into 0 is c. So ln r naught is what? It is c. So value of c is what? It is ln r naught. Now we found the value of c. Now we are putting this value into that equation again. So by putting this value we get ln r is equal to minus kt plus c की जगह हमने क्या रख दिया, ln r naught. That time kt is equal to ln r naught minus ln r log a minus log b, so it will be log a upon b. Okay, so k is equal to what? 1 upon t ln r naught upon r, and we know that ln is equal to 2.303 log base 10. So we have to write here the log 2.303 log. So it is k1 is equal to 2.303 log upon t r naught upon r. I hope you understood this equation, that how this equation is derived. So the final equation is k is equal to 2.303 upon t log r naught upon r. It is the integrated rate equation for first order reaction, and it is very important. Okay, so now the first order reaction also can be written as ln r upon r naught is equal to minus kt. How? So you can check here, and we can also write log r naught upon r is equal to kt upon 2.303. These two reactions are same as this reaction, but generally we can write this equation in more two types, like this and this, and you can understood how these reactions are possible. So when ln r is equal to minus kt plus ln r naught, so we can write ln r minus ln r naught is equal to minus kt. So it is the log a minus b, so it is log a upon b. Okay, as same the k is equal to 2.30 upon t log r naught upon r, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, kt upon 2.303 log r naught upon r. Okay, I hope you understood this equation. Now the next one is interval formula. So when in the question, suppose question is like at t1 you have concentration, at t1 you have concentration r1, and at t2 you have concentration r2. That time you have to use this kind of formula, not the integral equation. Okay, so for the interval, the what is the interval formula and how can we get the interval formula? Let's see. Suppose r1 and r2 are the concentration of reactants at t1 and t2 respectively. So k is what? t की जगह हम क्या लिख देंगे, t1. ओके, तो t1 क्या वैसे आएगा 2.303 upon k log r naught upon r1. So here r is the r1. Similarly t2 is equal to what? 2.303 upon k log r naught upon r2. So when we
subtract 2 minus 1, 2 minus 1, we get the T2 minus T1. Okay, so now T2 minus T1 is equal to what? 2.303 upon K log R0 upon R2. It's from here, and log R0 upon R1, it's from here. So it is log A minus log B. So again it is log A upon B. So finally we get the formula K is equal to 2.303 upon T2 minus T1 log R1 upon R2, and it is your interval formula. And student, it is very important, and the type of questions in which the R1 and R2 given, we can use this formula to solve the question. Okay, suppose हम R नोट को A लिखें. R नोट A means the initial concentration, and x1 and x2 are the concentration of R at time t1 and t2, so we can write it also A minus x1 upon A minus x2. Okay, next is the graphical representation. So first we are taking this equation ln r is equal to minus kt plus ln r naught. So it is a straight line graph. Okay, so y is equal to mx plus c. So when you draw this graph, on the y you have to write the ln r. Okay, at x axis you have to write the t, and now we can check that it is the k, minus k, t is our mx है ना. So it is the x पे t बना दिया हमने. तो what is the slope is minus k. It is minus, so it is uh, this type from up to down, because it is minus. Okay, and the slope is the minus k. Now clear. Then intersect is what? Intersect is ln r naught. तो यहाँ पर कट करेगा, it means it is our ln r naught at t is equal to 0. ओके, सो ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ग्राफ बिटवीन log r नोट अपॉन r एंड t. तो यहाँ से भी हम इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज log r नोट अपॉन r इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303 होता है. ऑलरेडी हमने इसको समझा है. तो log r नोट अपॉन r इज इक्वल टू k अपॉन 2.302 t ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा m, दैट इज अवर x एंड दैट इज अवर y. तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx. देयर इज नो इंटरसेक्ट. सो नाउ on y you have to write the log r naught upon r, on x you have to write the t, and the graph is positive. Graph is k upon 2.30, sorry, the slope is 2.303. it is positive, so it is from down to upward है ना. इस तरह से ग्राफ पॉजिटिव होगा हमारे पास स्लोप. सो स्लोप इज k upon 2.303. you can easily check out here the m is k upon 2.303. so this is our second graph. Next one, the third graph is graph between log base 10 r and t. ओके, तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे. तो दैट इज दी log r इज इक्वल टू वॉट? माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log r नोट. So it is also y is equal to mxc. So on y you have to write the log r, on the x you have to write the time, and intersect is log r naught, and the slope is your minus k upon 2.303. the slope again down आएगा, and the value of slope is minus k upon 2.303. understood? Okay, so these are the three graph. Next the four from the Wilhelm's equation. तो इसको हम समझते हैं पहले कैसे है ये इक्वेशन. सो ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के टी. ठीक है, सो log a अपॉन b इज log a, sorry, log a minus b, log a minus log b is log a upon b. So we can write log ln r upon r naught is equal to minus kt. Okay, so we can write it log e r upon r naught is equal to minus kt. अब यहाँ पर हमें एक्चुअली क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है दैट दी r एंड t है ना. तो r चाहिए, मीन्स log को हमें फिनिश करना है. सो इसको हम क्या करेंगे? टू दी पावर कर देंगे. तो दैट इज द e log e पावर log e, एंड r अपॉन r नोट यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस के टी कर देंगे. यू नो दैट e टू द पावर log e इज 1. उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. दैट टाइम इट इज r अपॉन r नोट हो गया e माइनस के टी, सॉरी e माइनस नहीं, e टू द पावर माइनस के टी. सो नाउ वी कैन राइट हियर r इज इक्वल टू वोट? r नोट e टू द पावर माइनस के टी. इससे हम इसकी क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं. सो नाउ व्हेन द t इज इक्वल टू 0, सपोज टाइम क्या है? 0 है, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर. तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू क्या होगा? r नॉट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 0 करते हैं, t इज इक्वल टू 0 मीन्स माइनस k इंटू टी, वो भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0. मीन्स e की पावर क्या हो गई? 0. इट मीन्स इट इज 1. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया बेटा? r इज इक्वल टू r नॉट. ठीक है ना, r क्या हो गया? r नॉट. जब टाइम 0 था तभी तो r क्या था? r नॉट था. तो टाइम इज इक्वल टू 0 पर हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया r नॉट. ठीक है, यही था. इनिशियल कंसंट्रेशन कब होती है? कोई भी कंसंट्रेशन इनिशियल कब होती है? व्हेन द t इज इक्वल टू 0. नाउ suppose we are taking
द टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम सेम लेते हैं, दैट इज हमारा इक्वेशन क्या है, दैट इज आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। द टाइम इज इनफाइनाइट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ये पूरा इनफाइनाइट हो गया। तो ई टू द पावर अगर इनफाइनाइट है इट मीन्स इट इज वन, sorry, it is 0, okay, it is 0. So ultimately we can write here the concentration of reactant is 0 at the infinite. इसका मतलब अभिक्रिया है या जो हमारे रिएक्शन से ये रेगुलरली चलती रहेगी, कभी फिनिश नहीं होगी, इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के ये कंसंट्रेशन फिनिश होगी, आर जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो दैट टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा हमारा, यू कैन चेक हियर, यहाँ पर टी इज इक्वल टू जीरो, द कंसंट्रेशन इज आर नॉट, रिएक्शन स्टार्ट हुई एंड वी नो दैट with the time the concentration of reactant continuously decreasing, but now to the exponential this graph found in that type ये से मिलेगा हमको, और यहाँ पर ये पैरेलल है मीन्स ये कभी भी फिनिश नहीं होगी, इनफाइनाइट टाइम पे फिनिश होगी, ये डायरेक्टली कट नहीं कर रहा है, ओके, अदरवाइज यहाँ पे जीरो हो जाता। तो वो कहाँ पर जीरो होगा, जो हमारा कंसंट्रेशन है दैट एट द इनफाइनाइट टाइम, ओके। सो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो गया सबको, आई थिंक। Next, the gaseous reaction of first order reaction. Suppose in the question there is not R1 and R2 given, but there is initial pressure and the pressure at any time is given. तो दैट टाइम हमारे पास जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं है, तो हमें प्रेशर से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। ओके, सो द gaseous reactions are studied by measuring the partial pressures of the reactant and the products. So suppose A is converted into B plus C, all are the gases, it is a gaseous reaction and the order of the reaction is first order reaction. Suppose P naught is the initial pressure of A, कोई भी आपका A सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल प्रेशर कितना है, P नॉट है। तो आपको पता है A का प्रेशर तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और B और C का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड द प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेज बाई एक्स, कितना डिक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एट टाइम टी है ना, तो देन द प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, तभी तो प्रेशर कितना है, पी नोट है, बट एट टाइम टी दिस प्रेशर इज डिक्रीजिंग बाई एक्स, तो इट इज पी नोट माइनस एक्स हो जाएगा, इतना डिक्रीज हो गया। तो ये अब आपके पास प्रेशर अवेलेबल है, ओके। सो नाउ फॉर ए द इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, फॉर द बी अभी ये बना ही नहीं है मीन्स प्रेशर जीरो, सी का भी जीरो, बट एट द टाइम टी वन इट इज पी नॉट माइनस एक्स, और इसमें से अगर एक्स डिक्रीज हुआ तो ये कितना बना, सपोज एक्स बना, और ये भी कितना बना, एक्स बना। सो टोटल प्रेशर एट टाइम टी क्या होगा, द सम ऑफ दिस प्रेशर, यही तो प्रेशर है टोटल एट टाइम टी। सो वी कैन राइट द टोटल प्रेशर इज P is equal to PA plus PB plus PC. And PA is what? PA is the partial pressure of A. PB is what? The partial pressure of B. And PC is what? The partial pressure of C. इन सबको हम sum कर देंगे, so we get the P total, है ना, P total. So now P naught, PA is what? P naught minus X, PB is X, and PC is X. So it is P naught minus X plus X plus X, X or X cancel, minus X plus X, then it is the P naught plus X. So we found the P is equal to P naught plus X. So here we can get the X is equal to what? P naught minus P. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, x is equal to what? P naught minus P. And now students, we know that at time t the pressure of A जो है वो कितना हो गया था हमारा, P naught minus X, and we get the value of X also. So यहाँ से हम PA फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, that is the PA is equal to what? P naught minus X, and X is what? P minus P naught. So it is P naught minus P minus P naught, so it is P naught minus P plus P naught, so it is 2P naught minus P. तो जो हमारा P है उसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, 2P naught minus P, okay. And we know that our equation is what, K is equal to 2.303 upon T log R naught upon R. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, R naught नहीं है, हमारा प्रेशर है, तो P naught upon P है, P is what, 2P naught minus P, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2P naught minus P. It is our formula for gaseous equation, okay. There is example for us for you to solve this. I have solved it already, so let's check it the example and understand the things, why the why the formula is like that and how the reaction happens and how we can solve the question. So it is for you, you can check it out and you can understand this, and if you are in doubt you can ask to me आफ्टर दिस, ओके। सो मैंने पूरा सोल्व कर रखा है, आपको पढ़ना है, समझना है कैसे हुआ है। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क टू मी। सिमिलरली जैसे हमने इसको डिराइव किया और जैसे इसका फॉर्मूला निकाला है, एज इट इज़ हमको यहाँ करना है, यहाँ भी यही करना है, सेम टू सेम है,
बस इसमें कुछ डिजिट हमने डाली हुई है, दैट इज द रिएक्शन इज 2N2O5, 2N2O5 कन्वर्ट इंटू N2O4 प्लस O2। सो इसको आपको लेना है, सपोज X डिक्रीज हो रहा है तो इसके मोल, इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसी रेशो में चलना है, दैट इज द 2x, ओके। और यहाँ पर भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज half life of first order reaction. So our the general equation is what? The K is equal to 2.303 log R naught upon R. You know that half time is T half, और T half पे कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसका क्या हो जाता है 50% डीके. इट मीन्स नाउ R is R naught by 2. So put this value in that. So K is equal to 2.303 upon T half log R naught as it is, और R की जगह हमने क्या लिख दिया R naught by 2. R naught कैंसिल, 1 by 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? So ये था 1 upon 1 by 2. So it is the 2. So now what we get, it is the log 2, and log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010. So when you multiply 2.303 into 0.3010, you found the T half is equal to 0.693 upon K. It is very important. It is the half life period of the first order reaction, and you know that 0.693 is constant or K is the constant. It means T half of the first order reaction is constant. It is independent to the R naught. Clear? But the zero order reaction T half is directly proportional to R naught. Okay, ये difference आपको ध्यान रखना है. So for the first order reaction T half is independent to R naught. R naught पर depend नहीं करता है. Now the examples of first order reaction. The first is hydrogenation of ethene. Ethene क्या होता है? C2H4 है ना, C double bond C. इट इज़ द इथीन. तो ये हो जाएगा आपका CH2CH2. इट इज़ द इथीन. इथीन का आप क्या करवा रहे हो? हाइड्रोजनेशन मीन्स H2 का एडिशन, इट कन्वर्ट इनटू H2S6. रेट इज इक्वल टू व्हाट? रेट किस पे डिपेंड करेगी? इसी पे डिपेंड करेगी. इसकी पावर कितनी? 1. सो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कुछ एग्जांपल्स हैं, याद करने हैं आपको. हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. All radioactive reactions, all natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei, always radioactive reactions are first order reactions. Thermal decomposition of ammonium nitrate, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये आपका एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो. तो जनरली ये रिएक्शन किस पे, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एस्टर के. सो इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. व्हेन यू राइट द रेट लो, वहाँ पर H2 को कंसिडर नहीं करना है, ओनली रेट लो इज इक्वल टू K एंड द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5. ठीक है, इसका पीछे रीज़न क्या है? H2 क्या होता है? बहुत एक्सेस में होता है और ये बहुत ही लेस अमाउंट में होता है. तो H2 की कंसंट्रेशन में जो लेस होता, मतलब मीन्स जो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ वेरी लेस, नेग्लिजिबल. तो इट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा. इट मीन्स डिपेंड किस पे करेगा? इस पे करेगा. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मीन्स सुक्रोज प्लस H2H प्लस, इसका इन्वर्जन हो जाएगा एंड इट विल बी डीकम्पोज इनटू द ग्लूकोज इन दी फ्रक्टोज. इन्वर्जन क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इन द हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर. ओके, इसका रोटेशन सपोज कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये कैसा हो जाएगा? प्रोडक्ट जो होगा वो लेवो रोटेटरी हो जाएगा. इट इज कॉल्ड द इन्वर्जन. डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2. क्लियर? H2O2 को तोड़ेंगे, दैट H2O प्लस हाफ O2. द रेट इज इक्वल टू व्हाट? K H2O2. इट इज ऑल्सो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Decomposition of N2O5, first order reaction. Decomposition of N2O, it's first order reaction. And the thermal decomposition of isopropane, ये आपका isopropane. एजो क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज़ 2 नाइट्रोजन. जब भी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं एजो. और एजो आइसोप्रोपेन, प्रोपेन क्यों बोल रहे हैं? देखो 3 कार्बन्स एंड 3 कार्बन्स. ठीक है, इसका जब डिसोसिएशन होगा तो N2, दैट इज द N2, बचेगा क्या? 1 2 3 1 2 3, तो C6H14. इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर हम. सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ इन 50 सेकंड, मीन्स द T हाफ इज 50 सेकंड. ओके, तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट निकालना है तो यू कैन इजीली, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है T हाफ का? T हाफ इज इक्वल टू व्हाट? 6.93 डिवाइड बाई K. तो यहाँ से हमको K फाइंड आउट करना है. K इज इक्वल टू व्हाट? 0.693 डिवाइड बाई T हाफ. सो प्लीज राइट द वैल्यू. ये हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 50. इट विल बी द आंसर 1.386 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकंड इनवर्स. सेकंड इनवर्स द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा. ओके, इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी. एंड इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स लाएगा ये टॉपिक. So students, all the best to all of you, and please do smart study and do hard work. All the best to all of you.